नमस्कार साथियों। एमएससी फाइनल महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के कोर्स के ऑप्शनल पेपर जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्री फंक्शंस का अध्ययन हम इस वीडियो की सीरीज में कर रहे हैं। पिछले वीडियोज के अंदर हमने जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्री फंक्शंस के कंटिग्यूअस रिलेशंस के बारे में अध्ययन किया। आज हम सेल्सियस थ्योरम्स की प्रूव करेंगे। सेल्सियस थ्योरम का प्रूव करने से पहले कुछ फंडामेंटल रिजल्ट्स, सामान्य रिजल्ट्स जो हमारे काम आएंगे उनकी अपन चर्चा करते हैं। पहले एल्फा फैक्टोरियल n माइनस के, इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। तो एल्फा फैक्टोरियल n माइनस के इज इक्वल टू होता है अपने पास एल्फा प्लस 1 टू एल्फा प्लस n माइनस के n माइनस ऑफ 1। मैं इसको ऊपर फैक्टोरियल अगर एल्फा बनाऊं तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें एल्फा प्लस 1, एल्फा फैक्टोरियल n बनाना चाहता हूं मैं इसको। तो एल्फा प्लस n माइनस के माइनस 1 और इसके आगे की टर्म्स मैं यहाँ गुणा करता हूँ। तो एल्फा प्लस n माइनस के से स्टार्ट करता हूँ मैं और आगे तक चलते हैं अपन। एल्फा प्लस n माइनस 1 यहाँ तक आते हैं। तो एल्फा प्लस n माइनस के यहाँ तक था, k माइनस 1। इसके बाद की टर्म्स ले ली अपन ने, इसमें एक जोड़ दिया, फिर दो जोड़ दिया और लास्ट के अंदर अपन ने इस टर्म के अंदर जो एल्फा प्लस n माइनस के माइनस 1 थी उसके अंदर मैंने प्लस के जोड़ दिया। तो प्लस के तक अगर जाता हूँ मैं यहाँ से लेकर, तो यहाँ पहले 0 जोड़ा और यहाँ पर अपने के तक गए तो अपन ये टर्म्स अपने पास आ जाएगी एल्फा प्लस n माइनस 1। तो नीचे भी यही टर्म्स में अगर लिख लूँ सारी की सारी, तो मैंने जो एक्स्ट्रा टर्म्स काम में लिए देखिए एल्फा प्लस n माइनस 1। इससे पहले वाली टर्म्स मेरे पास रहेगी एल्फा प्लस n माइनस 2 और इस तरह से यहाँ तक आया तो मेरे पास रहेगी एल्फा प्लस n माइनस ऑफ के। मैं रिवर्स टर्म से वापस इधर तक आ गया। ये अब एल्फा से स्टार्ट हुई एल्फा प्लस 1 और एल्फा प्लस n माइनस के माइनस 1 तक, तो तीन टर्म्स को और जोड़ लिया और एल्फा प्लस n माइनस 1 तक चले गए। इसका मतलब दिस इज एल्फा फैक्टोरियल n बन गया अपने पास। और नीचे वाले जो टर्म्स है उनको अगर अपन देखें तो यहाँ एल्फा प्लस n माइनस 1, एल्फा प्लस n माइनस 2, एल्फा प्लस n माइनस के, टोटल टर्म्स माइनस 1 से स्टार्ट है, माइनस के तक गई तो के टर्म्स है। मैं इसमें से माइनस 1 अगर कॉमन ले लेता हूँ इन सब में से, तो मेरे पास जो टर्म बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी। दिस वन 1 माइनस एल्फा माइनस ऑफ n। ये टर्म्स 2 माइनस एल्फा, या मैं लिखूँ इसको 1 माइनस एल्फा माइनस ऑफ 1 माइनस एल्फा माइनस n प्लस 1। तो ये इस तरह से जा रही है और ये टर्म जो यहाँ जाके बन जाती है 1 माइनस एल्फा माइनस n प्लस के माइनस 1, यहाँ तक आ गई अपने पास। तो 1 माइनस एल्फा माइनस 1, फिर इसमें एक जुड़ गया, फिर दो जुड़ गया एंड लास्ट में के माइनस 1। इसका मतलब के टर्म्स अपने पास इस तरह की आ गई। तो इसको भी अगर फैक्टोरियल नोटेशन में लिखें तो ये अगर a है, ये प्लस 1, a प्लस के माइनस 1 तक गए अपन, तो दिस विल बी एल्फा ऑफ n माइनस 1 की पावर के माइनस 1 की पावर के को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस एल्फा माइनस n ऑफ फैक्टोरियल के। दिस इज एल्फा फैक्टोरियल n माइनस के। ये हमारा रिजल्ट बन गया। चलिए इस रिजल्ट को मैं दोबारा लिखता हूं। हमने कहा कि हमारे पास रिजल्ट आ गया एल्फा ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू -1 की पावर k
alpha of n or 1 minus alpha minus n of k. Take alpha is equal to 1, then this is 1 of factorial n minus k, this is minus 1 की power k, alpha is 1, so 1 factorial n upon 1 minus alpha, alpha is 1 minus of n factorial k. 1 factorial k is factorial k. So 1 upon factorial n minus k, this is factorial of n minus k is equal to minus 1 की power k. 1 factorial n is nothing but the factorial of n. This is minus n of factorial k. तो इसका दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है माइनस n factorial k is equal to minus n factorial k is equal to minus 1 की power k factorial n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस k. तो ये दो रिजल्ट्स हमारे काम में आएंगे. एक रिजल्ट और सीरीज रीअरेंजमेंट टेक्निक होती है. इफ यू हैव अ डबल सीरीज, दिस इज k is equal to 0 to n, this is 0 to infinity, n is equal to 0 to infinity, and the function of k and n. There are two variables, k run from 0 to infinity and run from 0 to infinity. This is a double series. So this series is equal to this one, n is equal to 0 to infinity and k is 0 to n. This is a. K and n will be replaced by n minus k. By the series rearrangement techniques, we can write this double series in the form of this double series, in which here the both series are infinite series, here the one series is infinite and one series is finite. Okay, now if we have q plus 1 f of q alpha 1 alpha 2 to alpha of q plus 1 एंड नीचे मेरे पैरामीटर है बीटा 1 बीटा 2 से लेके बीटा ऑफ q एंड z. दिस इज ए p of q where p is equal to q plus 1. If in this summation of beta j is equal to 1 to q is equal to summation of alpha I is equal to 1 to q plus 1 plus 1, means summation of the denominator parameter exceed by 1 the summation of the numerator parameters. न्यूमरेटर पैरामीटर में कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर पैरामीटर q है तो न्यूमरेटर पैरामीटर q प्लस 1 है. एक पैरामीटर एक्सीड कर रहा है और इनका समेशन का सम भी एक से एक्सीड कर रहा है. तो उस केस के अंदर समेशन का सम उल्टा एक्सीड कर रहा है कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा q का जो सम है वो इन ऊपर वाले q प्लस 1 पैरामीटर के सम से एक अधिक होगा. तो ऐसे केस के अंदर इस जो प्रॉपर्टी है किसी भी q प्लस 1 such q plus 1 f of q is known as Saalschutzian, SCHUTZIAN. तो Saalschutzian हम बोलते हैं कि किसी भी पी एफ क्यू के अंदर when p is equal to q plus 1 and the sum of the numerator parameter and is less than 1 by the sum of the denominator parameter, then we say this q plus 1 fq, that p f q is a Saalschutzian. Now we will prove the Saalschutz theorem. So now we'll write the Saalschutz theorems and then we will prove it. The Saalschutz theorem is this one.
if सेल्सियस थ्योरम, ये नहीं चलेगा, दूसरा पेन लेते हैं अपन। सेल्सियस थ्योरम, सेल्सियस थ्योरम। If n is independent, if n is a non-negative integer and if A, B, C are independent of n, then 3f2 C 1 minus C plus A plus B minus of n, and this is B and this is A and minus of n. 1 is equal to C minus A of factorial n, C minus B of factorial n, C factorial n, and C minus A minus B of factorial n. This theorem is known as Saalschutz theorem because the sum of the numerator parameters, here numerator parameter sum is minus n plus a plus b, and the sum of the denominator parameter is c, इस c से कट जाएगा तो अपने पास minus a n plus a plus b plus 1, means sum of the denominator parameter is exceed the sum of the numerator parameters by 1. So this is a Saalschutzian hypergeometric function, and the theorem is called the Saalschutz theorem. So in proof, for Gauss hypergeometric function, we have an transformation formula 2f1 C minus A, C minus B, and C Z is equal to 1 minus Z raised to power A plus B minus of C, and 2f1 A, B, C, and Z. This is transformation formula we are having for the Gauss hypergeometric functions. Now we will expand from both the sides. In the left hand sides we have one series, but in the right hand side if you see, then 1 minus Z raised to power this one. So chunki 1 minus Z raised to power minus of alpha is nothing but the summation n is equal to 0 to infinity. This is alpha factorial n upon factorial n and Z raised to power n. So this is gives us a infinite series, and 2f1 itself is an infinite series. तो इन दोनों को अगर अपन सीरीज एक्सपेंशन कर लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, तो अपन देखते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड बनेगा LHS जो बना, दिस इज द सीरीज n is equal to 0 to infinity. This is C minus A of factorial n, C minus B of factorial n upon C factorial n, Z की पावर n upon factorial n. और इन द राइट हैंड साइड की बात करें अपन, अपने राइट हैंड साइड बन जाएगी वन सीरीज इज दिस वन. This is n is equal to 0 to infinity. C minus A minus B of factorial n upon factorial n, Z की पावर n.
एंड दिस इज अनदर सीरीज. दूसरी सीरीज के लिए ले लेते हैं अपन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. तो यहाँ बन जाएगा a ऑफ फैक्टोरियल k, b ऑफ फैक्टोरियल k, c फैक्टोरियल k एंड z की पावर k अपॉन फैक्टोरियल ऑफ k. इस अगर इक्वेशन का अपन 1 नंबर लगा दें, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड हो गई 2 नंबर, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड्स. Now we will solve this right hand side by the series rearrangement techniques. Okay, we will write again this right hand sides. The right hand side of 1 is equal to, this is series n is equal to 0 to infinity, and देखा अभी कि c माइनस a माइनस b ऑफ n, इसको अपन डबल सीरीज थी, डबल सीरीज को एक साथ ले लेते हैं. एंड सीरीज k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c माइनस a माइनस b ऑफ n upon factorial n and a factorial k, b factorial k upon c of factorial k, z की पावर k प्लस n, एंड नीचे अपने पास आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k. वी नो दैट दिस सीरीज k is 0 to infinity, n is 0 to infinity, a of nk is nothing but the n is 0 to infinity, k is 0 to n, and a of n minus k and k. By the series rearrangement technique, if we use this series rearrangement technique in this, then the RHS will be gives us, this will be summation n is equal to 0 to infinity and k is equal to 0 to n, c minus a minus b, n will be replaced by n minus k, this is factorial of n minus k, and this will be ak, this is b of k, and then c of k, z की पावर k plus n minus k upon factorial of k. चूंकि alpha of n minus k we have just solved it, this is minus 1 factorial minus 1 raised to power k alpha of factorial n upon 1 minus alpha minus n of factorial k, and minus n of k, this is minus 1 की पावर k upon factorial n and factorial n minus k. We have just proved these two results. On using these in this right hand side, the right hand side will becomes, this will be summation n is equal to 0 to infinity, summation k is 0 to n. This term will be give us minus 1 की पावर k, c minus a minus b of n, alpha n minus k is this one, upon 1 minus alpha minus 1 होता है, 1 minus c plus a plus b and minus of n of k. 1 upon factorial n minus k, 1 upon factorial n minus k is minus n of k minus 1 of k upon factorial n, and बाकी की जो टर्म्स है a of factorial k, this is b of factorial k, c of factorial k and z raised to power n upon factorial k. The right hand sides becomes we get the right hand sides
summation. This is n is equal to 0 to infinity. Next term is k is 0 to n. Minus n factorial k, a factorial k, b factorial k. नीचे मेरे पास बचता है 1 minus c plus a plus b minus n of factorial k. वन अपॉन की पावर n, 1 की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k. इसके अलावा जो सिर्फ n की टर्म्स है, that will be in the numerator we have n terms is z raised to power n, and in denominator we are having factorial of c minus a minus b of n is also there. C minus a minus b of factorial n, this term upon factorial n. These are the independent of k. So we see here that this is n is equal to 0 to infinity, and this is nothing but the 3f2 minus n a b 1 minus c plus a plus b minus n, and one terms is was also there, c of factorial k. This c factorial k c factorial k is also here, so we will write here c factorial k. This is c and this is 1, and c minus a minus b of n upon z की power n upon factorial of n. Our left hand side is, the left hand side we have write first, that was the summation n is 0 to infinity c minus a of factorial n, c minus b of factorial n, c of factorial n, and z की power n upon factorial n. On comparing the coefficients, of z की power n from in both the side, RHS and LHS, we get desired result. Thank you.